कन्हैया लाल, जय भीम भैया, जय भीम, मोस्ट वेलकम आपका। कैसे हो? कैसे हो भैया?
ए बाबू, आकाश, ये यहाँ इधर से कपड़े उतार लेना, अंदर कर लेना। शिवांशी वो वाला कलर यूज कर रही है। कौन सा कलर? बर्थडे वाले। बोल दो, रख दो, काम कर लो आराम से बैठ के। चलो पेपर कर कितने? लिया है। पेपर तैयार, चलो यूज कर। कोई बात नहीं, आ रही हूँ मैं भी। क्या आटा सान रहे हो? आटा लगा रही बेटा। लगा रहे हो क्या सान रहे हो? अरे उसी को सानना लगाना। जुराब डालो, मौसम ठंडा काफी है, पैर में जुराब डालो, नंगे पैर इस तरीके से नहीं अच्छा लगता।
प्रवीण, स्वागत है भैया आपका। मोटिवेशनल शॉर्ट्स। जय भीम क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी, आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? स्वागत है आपका। खाना पीना हुआ कि नहीं भाई अभी? आपका खाना पीना हो गया? आटा लगा रही हूँ भाई, अभी गूंद रही हूँ आटा। अभी कहाँ, अभी आटा गूंद रही हूँ, अभी रोटी बनाऊंगी। आपका हो गया? आपका खाना हुआ भाई? खाना हुआ कि नहीं अभी?
जय भीम, नमो बुधाय सोनू भैया, मोस्ट वेलकम है आपका। कैसे हो आप? क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम सोनू भैया, कैसे हो? आज भी ड्यूटी जाने की वही टाइमिंग है, चेंज हुई? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भैया, रोटी बनाने जा रही हूँ। अब वही टाइम पहले वाली कि 3 बजे वाली? तीन? अरे राम, ऐसा क्यों? सोते कितना हो? यहाँ पे भी तो रेस्ट नहीं मिलता आपको कि 1 आध घंटे रेस्ट मिल जाए? चार आया हूँ आज शाम को। शाम को 4 बजे आए हो कि मॉर्निंग में? हाँ, अच्छा, तो फिर खाना ना ले गए हो? जय भीम जय संविधान, जय भीम भैया।
जय भीम भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, जय भीम। जय भीम भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय सोनू भैया। जय भीम, लाइक डन, थैंक यू समर भैया, मोस्ट वेलकम है आपका। कैसे हो? खाना पीना हुआ कि नहीं भैया? जय भीम जी, जय भीम भैया, जय भीम। कैसे हो? मैं बिल्कुल मस्त हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? जी आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, नहीं किया है भैया, कल कर लेंगे। मेरा यह वाला चैनल मैन है। अच्छा, जब नहीं सब्सक्राइब करता कोई तो हंसते हो, तब तो अच्छी बात है भैया। लोग रोते हैं जिसका चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं करता, आप हंस रहे हो। थैंक यू भैया, थैंक यू। और बताओ, खाना पीना हुआ समर भाई जी आपका? खाना पीना हुआ आपका?
50 सब्सक्राइब में इजली करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे अजनबी से करवाना है। अजनबी से करवाना है? किससे करवाना है भैया? अपनों से नहीं, अजनबी से। हाँ, अजनबी कौन है भैया बताओ? आपके लिए अजनबी कौन है बताओ, हम भी हेल्प करेंगे। और आपका खाना पीना हुआ? कहाँ खाना पीना हुआ, रोटी बना रही हूँ भाई अभी। अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ। मेरा तो रोज काम होता है, क्या करूं बताओ? कब होता है कि काम होता है, पहले ये डिसाइड करो सोनू भैया। कब होता है कि काम होता है? आप लोग मेरा अपने हैं। अच्छा, हम लोग तो आपके अपने हैं। अजनबी कौन है बताओ, उसी से ना आपका सब्सक्राइब करवाएंगे पकड़कर। आप बोल रहे हो ना अजनबी से करवाना है, बताओ कौन है, उसको पकड़ के लाएंगे, फिर आपका चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे। वो नहीं बता वो नहीं बताओगे? अच्छा, फिर हमको पता कैसे चलेगा? हमको पता कैसे चलेगा भैया बताओ? गरम गरम रोटी तो हम खाना शुरू करें। बताओ भैया, समर भैया बताओ। उनको भी दे देना। थैंक यू सो मच समर भाई। बताओ जल्दी बताओ। आपको फुल सपोर्ट है? अच्छा, सपोर्ट है वो तो मैं भी जान रही हूँ। बाय में बता के फिर जाना। अभी मैं साधना जीजी के लाइव में था। अच्छा, साधना जीजी की लाइव में। थैंक यू भैया। राजकुमार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय आपको भी। और जी क्या हाल चाल है? खाना पीना हो गया आपका? नहीं भैया, रोटी बना रही हूँ अभी। और जी क्या हाल चाल है? खाना पीना हो गया? तेरा नंबर लाइक कर दिया। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं बताऊंगा। क्यों समर भाई, क्यों नहीं बताओगे? फिर बताओ, मैं परेशान हो जाऊंगी। जय भीम, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। ओके राजकुमार भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरी मर्जी, आपकी मर्जी मेरी भी मर्जी है। बिना जाने मैं तो आपको जाने नहीं दूंगी। मेरी लाइफ में माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। अच्छा अच्छा समर भैया, ऐसी बात है। आप भी मेरे से भाई मत बोला करो। आप कुंवारी होती, शादी नहीं होती आपकी, तो मेरे से भाई बोलना अच्छा लगता आपको। अच्छा, फिर क्या बोलूं राजकुमार भैया, बताओ जरा मुझे। फिर से भैया, नहीं राजकुमार भैया से बोल रहे हूँ। क्या लिख रहे हैं पहले कमेंट में देखो। ये कौन सी बात होती है कि मतलब जो कुंवारी रहेगी वो भाई बोलेगी, जो शादीशुदा वो भाई नहीं बोलेगी? फिर आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी हो जाएगी, अपने ससुराल जाएंगी, तो आपको भाई नहीं बोलेंगे? उनको फिर क्या बोलोगे आप? पता नहीं कैसी सोच है, क्या कमेंट करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। सच्ची भाई, समर भाई, मुझे तर्क वितर्क इस तरीके से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इन लोगों की पता नहीं कैसे सोच होती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं बहुत छोटा हूँ अभी। ओके भाई, थैंक यू। मतलब शादी हो जाने के बाद रिश्ते अलग हो जाते हैं, इनके कहने का मतलब यही है। समझा करो। क्या समझो समर भाई, बताओ। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं भैया। मेरा नाम लेके बुलाओ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद है। आप मेरा नाम लेके कमेंट करें। अगर नहीं पसंद है तो आपको जहाँ खुशी मिले वहां जाया करो, जो आपकी भाभी बने उनके लाइफ में जाया करो। मुझे नहीं पसंद है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ जीजी, मैं तो शादीशुदा हूँ। कोई बात नहीं समर भैया, मैं राजकुमार भैया की बात कर रही हूँ। फिर से मजाक किया, अभी मैं क्लास 10th में हूँ। ओके राजकुमार भैया, ओके, कोई बात नहीं है। ओके, आपकी जहाँ खुशी वहां मेरी भी खुशी है। प्रमोद भैया, बड़े भैया जी कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बड़े भैया जी आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। लाइक कर दिया, थैंक यू भैया, थैंक यू। राजकुमार यू कैन गो। पता नहीं इनकी मानसिकता कैसी होती है, सोच में समझ नहीं पाती। मैं तो इन लोगों को बोलती हूँ, मैं ये जबरदस्ती किसी को नहीं कहती कि मेरे लाइव में रुको, मेरे लाइव में रुको, लेकिन एक अपनापन होना चाहिए। ये नहीं है कि छुछुरपना जो आए बोल के चले जाओ। मस्त है, ओके भैया, थैंक यू। मस्त ही रहना चाहिए। आपको अगर बहन बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको दूसरे रिश्ते से क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? हमको भी अच्छा नहीं लगता। आप जा सकते हो हमारी लाइफ से, आपको जहाँ खुशी हो आप वहां जा सकते हो।
खाना पीना हुआ प्रमोद भैया आपका? सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ जी जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मन में कुछ हो भाई, सामने से आप रिस्पेक्ट देते हो अच्छा लगता है, चाहे आप क्या समझते हो ये नहीं बता सकते। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी भैया। आपके घर पे सब कैसे हैं? हाँ अभी अभी खाए हो भैया? हमारे घर पे सब ठीक है जी जी। कितना अच्छा सुनने में लगता है, बहुत अच्छा भाई। एक इंसानियत होनी चाहिए समर भैया। कोई शब्द पहले अपने आप के ऊपर रख के चखना चाहिए कि शायद ये शब्द जो मैं किसी दूसरे को बोल रहा हूँ, अगर कोई यही शब्द मुझे बोलेगा क्या मुझे अच्छा लगेगा? पर ऐसा नहीं सोचते हैं। क्यों प्रमोद भैया, बाय कहाँ जा रहे हो? क्या करना है? बड़ा जल्दी बाय करके चले जाते हो। नहीं, कुछ लोग होते हैं। हाँ भैया समर भैया सही बात बोल रहे हो, कुछ लोग होते हैं समझाने में भी समझ में नहीं आता। समर भैया आप लाइव कब आ रहे हो बताओ? जो ना अपने घर में किसी को रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही बाहर में। बिल्कुल भैया बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप। मैं बताऊं समर भैया, रिस्पेक्ट नहीं करते तो रिस्पेक्ट पाते भी तो नहीं है। हम उनमें से नहीं। अरे नहीं मेरे भैया प्रमोद भैया, आपकी बात नहीं बोली हूँ मैं। आप मेरे लाइव में जितने दिन से जुड़े हैं, आपने मुझे कभी एक शब्द नहीं, चाहे मेरे लाइव में 1 मिनट रुकते हैं चाहे 2 मिनट रुकते हैं, अपने आप पे मत सोचना प्रमोद भैया। अभी देखे नहीं है ऊपर कमेंट जो लिखे, एक भाई आए थे राजकुमार नाम था जिनका, उनको मैं आज 10 दिन से समझा रही हूँ कि मेरा अगर आपको नहीं रिश्ते पसंद है, सिस्टर बोलने में आपको दिक्कत है, बहन बोलने में दिक्कत है, तो मेरा नाम है, मेरे चैनल पे मेरा नाम लेके लिखो कमेंट। लेकिन नहीं, जिसकी आदत हो जाती है तो फिर जाती नहीं है। आपको नहीं बोला है प्रमोद भैया, आप मत सोचना अपने ऊपर। जो आदमी अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं करता, यकीन मानो वो दुनिया में किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये बात राइट है समर भैया। प्रमोद भैया बताओ आपका खाना पीना हुआ कि नहीं? जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम दीदी, जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पूजा सिस्टर आप हो? बताओ। ऐसे लोगों से दूरी बना लेने से अच्छा होता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल राइट। मुझे खुद ही नहीं पसंद है समर भैया, सीधी सी बात है। और जो मुझे नहीं अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता, चाहे कोई भी हो। हाँ
अभी खाना खा लिया है। ओके भैया, और बताइए आपके परिवार में सब कैसे हैं? फिर से भैया, अब मैं भैया ही बोलूंगी समर भैया आपको। अब भैया ही बोलूंगी। आप सोच रहे हैं ना किसी दिन प्लानिंग बनाएंगे आपके घर आने की समर भैया? बहुत बढ़िया। ओके भैया, थैंक यू। बढ़िया ही रहना चाहिए। जी जी, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत, इसलिए भाई बोलना, समर भाई। अच्छा अच्छा, अभी बात कर रहे थे रिस्पेक्ट की, अभी बात कर रहे हो, बोलो समर भाई। आप हमें जीजी बोलो, हम बोले समर भाई। हाँ, आपका इंतजार रहेगा। ओके भैया, थैंक यू। हो सकता है कभी सौभाग्य ऐसा रहे। कब आ रहे हो? जय भीम, नमो। एक दिन हमारे यहाँ भी आओ। ओके प्रमोद भैया जी, ओके। जब उधर कभी आएंगे ना, कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप हमें इस बात के लिए कई बार बोले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद बड़े भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुरेश भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। मोस्ट वेलकम आपका है। कब आ रहे हो? कब आए भैया बताओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बड़े भैया के घर, बिल्कुल भैया, आप सबसे बड़े हैं। हमारे लाइफ में जितने भाई बहन हमसे जुड़े हैं, हमारे ख्याल से सबसे बड़े आप ही हैं। मैं अपना पूरा एड्रेस फिर बता दूंगा आपको, स्टेशन से ले आऊंगा। ओके भाई, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऐसे ऐसे भाई हो तो बहन तो गर्व से बोलेगी ही ना। जय भीम भैया, जय भीम, जय संविधान। दिल से जय भीम, दिल से जय भीम भैया, थैंक यू, सेम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद बड़े भैया जी। थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। सुरेश भैया, आपका खाना पीना हो गया क्या? थैंक यू भाई, थैंक यू। समर भाई, थैंक यू सो मच। अभी तो नहीं हुआ हमारा खाना पीना, आपका हो गया? रोटी बना रही हूँ सुरेश भैया, आज मैं भी रोटी बना रही हूँ। रोज बन जाती थी, आज भी लेट है क्योंकि हस्बैंड का आज ऑफ है, ड्यूटी नहीं गए हैं ना, इसलिए खाना बनेगा तब खाएंगे तुरंत। मैं अपना घर में सबसे छोटा हूँ, 18 साल का। अच्छा, घर में सबसे छोटे हैं आप? कोई बात नहीं है, जिस दिन आएंगे ना, हाथ पैर थोड़ी सी रस्सी में ऐसे बंधवा के खिंचवा के सबसे बड़ा करवाएंगे आपको। 8 दिन बाद 18 साल हो जाएगा। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो समर भैया? ये ऐसा नहीं कि बहनों से झूठ बोल रहे हो, नहीं। फिर जान लो, कभी बात सामने आ गई तो फिर हम बात भी नहीं करेंगे आपसे। हमसे 9:30 बजे तक पहले रोटी नहीं खाते रोजाना, गई आदत हमारी तो होगी। हाँ भैया, हम भी तो 10:30 11 बजे से पहले खाना नहीं खाते हैं।
पर जो ड्यूटी जाने वाले हैं तो वो तो खाना ले ही जाते हैं। अब ठंडा गर्म चाहे जैसे रहे खाना पड़ता है। नहीं झूठ नहीं बोलता, बस कभी कभी मजा अच्छा ओके भाई थैंक यू। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये शो प्रतिशत सही बोल रहा हूँ। थैंक्स भैया थैंक्स। सही बोलना चाहिए, कभी अपने फैमिली में झूठ नहीं बोलना चाहिए। फैमिली में झूठ बोल के कहाँ जाओगे, सच तो सामने आ ही जाता है। थैंक यू सुरेश भैया थैंक यू। जी जी चलता हूँ। कहाँ चलते हो? साधना दीदी की लाइव में सोने। खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ भैया ठीक है खाना खा लो। बाय बाय। बाय बाय समर भैया। बाय बाय गुड नाइट बाय बाय। खाना खाने के बाद सो जाऊंगा। ओके सो जाना। बाय बाय। अपना ख्याल रखना। आप भी भैया आप भी अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। ओके भाई थैंक्स। बहुत ओके ओके थैंक्स। सभी अच्छा सभी लोग खाते हो 10:30 बजे। थैंक यू समर भैया। आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। थैंक यू सुरेश भैया थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आकाश मोटर चालू कर लो बेटा। आज कपड़े धुलाए थे ना, टंकी खाली हो गई है, मोटर चालू कर लो। थैंक यू जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सुरेश भैया। मोटर चालू कर लो बेटा, टंकी पूरी खाली हो गई है। थैंक यू सोनू भैया। बाय 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 सुरेश भैया बाय बाय। थैंक यू सोनू भैया। बाय बाय सुरेश भैया। हट जाओ एक साइड जाओ बेटा। नहीं जुराब पे चप्पल डाल लो। उल्टा काम काहे करते हो? छिपकली रोने वाली, बैग उठा के बैठ के काम करनी है, मंडे को पेपर है। अभी होती तो वो करती आपसे।
अभी बोल दूंगी ना कि मामा देखो कमेंट कर रहे हैं, तो पढ़ना छोड़ देगी, पक्का आ जाएगी। दोपहर में जब मैं थोड़ा सी फुर्सत में आई, मैंने कहा अच्छा लाओ थोड़ा सा सपोर्ट करूं मामा को, कह रही नहीं नहीं आप रहने दो, मैं करती हूँ आज, मैं उनको सारी छिपकली भेजूंगी। पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रही थी, मैं फिर काम कर रही थी। उसके पापा हंस रहे, अपने पापा को दिखा दिखा के कर रही थी, पापा देखो मैं मामा को क्या क्या भेज रही हूँ। जब रोने वाली पिक्चर लगाए थे ना श्रेया का, श्रेया देख के लगी रोने, बेड पे रोने लग गई, फिर छोटी दिखाई अपने पापा को पापा देखो मामा ने इसकी श्रेया की फोटो लगा दी है, ये रो रही है देख करके सच में 1 घंटा कंटिन्यू बैठ के रोई है फोटो देख के अपना फिर मुझे उसको चुप कराने में टाइम लगा। खाना पीना कुछ खाए कि नहीं अभी? नहीं, 3 बजे। अरे कुछ तो खा लेते, ड्यूटी ले जाना चाहिए ना आपको कुछ थोड़ा बहुत, जब 4 बजे गए वो शाम को, तो 3 बजे कोई खाने का टाइम होता है? खाना ले जाना चाहिए आपको। अखिलेश कुमार, हेलो दीदी। हेलो भैया, स्वागत है आपका, कैसे हो अखिलेश भैया? मोस्ट वेलकम है आपका, कैसे हो? जय भीम, नमो बुद्धाय, कैसे हो आप? ठीक है, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना सुनाओ, खाना पीना हुआ कि नहीं आपका?
प्रोफाइल क्यों चेंज की अभी? कौन सी प्रोफाइल चेंज करी भाई? आप क्यों एक ही बात रोज पूछते हो गया आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ भैया। मैं तो भी रोटी बना रही थी। कहानी पहले खुद चालू करके बाल्टी में, उसके बाद भरना। क्योंकि जो बुला दो, श्रेया रहती है तो मदद करा देती है फटाफट। हाँ अभी जा रही है श्रेया, जा बेटा। कब खाएंगी? खा लेंगे भैया, अभी नहीं खाएंगे इतना जल्दी। दरवाजा बंद। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। बाबा मोर चलो बोले कलमिया की तीर, बाबा मोर चलो। कमना बना ढूढ़ा सूरत तुहरे भी मुझे, कौन बना ढूढ़ा सूरत तुहरे भी मुझे, कौन बना ढूढ़ा। कोई नहीं है लाइव में। अभी नहीं, अभी सोनू मामा गए काम कर रहे थे, अभी आएंगे। सोनू मामा का क्यों? अब क्यों, उनको काम नहीं है? खेलूंगा।
खेलोगे? उनके साथ खेलोगे? करे खेलूंगी। ये दोनों मामा सोनू मामा दादा देखे, मैंने कहा नहीं। यही हूँ। करे खेलूंगी। जितनी मम्मी खा गया मीठा क्या खेलेगी? हैं? क्या खेलेगी? मैं हाँ, मैं एक चीज करूंगा मामा के साथ क्या करेंगी? काम की मामा भी काम कर रहे हैं, बिजी हैं, परेशान नहीं करते बेटा। मैं परेशान कर रहा हूँ हाँ, मैं कर रहा हूँ परेशान नहीं करते, मामा भी काम कर रहे हैं। आप नहीं काम करो, पढ़ाई का बस, परेशान नहीं करते हैं। मैं क्या किया हूँ काम कर लो बस। मामा हेलो मामा हेलो बाद में वीडियो कॉल करके बतिया लेना। हेलो मामा जी मैं दर्द हो रहा हाँ, वो खा लिया था ना पनीर हाँ पनीर ज्यादा खा लिया ना, नुकसान कर रहे हो। वहाँ पे भी भर का दे दिया था पूरा भर का फिर काहे खा लिया, कम ही खाना चाहिए था ना। कहाँ मैं 11 बजे को निकल आऊँ 4 बजे पहुँचूँ घर हम्म, तो इसको भी ले जाओ ना अपने घर, दोनों के बीच में रख देना, ये छीन के खा ही जाएगी सबका।
क्या लिख रहे हो कन्हैया भैया, जरा हमें बताना। क्या लिखे हो? बोलना जरा, हमको नहीं आता क्या इंग्लिश? बात हमेशा सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा शब्द नहीं लिखना चाहिए कि पलट के कोई आपको कुछ गलत शब्द बोले तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमको भी सुनाने आता है, इसका मतलब नहीं है कि हम यहाँ बैठे हमको कुछ आता नहीं है। आपको इंग्लिश आती है, बाकी किसी को कुछ आता नहीं है। थोड़ा बहुत सबको आता है, पर शब्दों का चुनाव ना सोच समझ कर करना चाहिए। अभी हम आपको कुछ सुना देंगे ना तो शायद बहुत बुरा लगेगा। हम सबका सम्मान करते हैं, काम ऐसा करो ना कि आपके लोग तारीफ करें, ऐसा काम ना करो कि गाली सुनने वाला।
जय भीम भैया, कैसे हो? हम्म। हम ठीक है, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक है भैया, आप अपना सुनाओ। कहाँ से लाइव कर रही हैं आप? दिल्ली से। आप बताओ, आप कहाँ से हो? अच्छा जी। चिकन। अरे ये तो कहाँ से? चला जाता हूँ वापस अपने। नहीं बेटा, आराम से। तो डांटेगा मुझे। मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ और पूना में रहता हूँ जी। ओके भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। और बताइए, खाना पीना हुआ आपका? खाना पीना हो गया आपका? हाँ जी हुआ, आपका हुआ? अभी नहीं हुआ भैया मेरा खाना। आराम से सो जाओ। बस अब सो जाओ, अब नहीं। मम्मा, जब हम लोग जा रहे थे ना वहाँ, हाँ, तब ना वो मिले थे जिनने बताया था कि 3 बजे होगा। बड़े पापा हैं। हाँ, उन्हें वो ना रास्ते में मिले थे नंगे पैर। आप बाहर बैठी हैं चौक में? मैं आपको बाहर दिख रही हूँ भैया, घर पे बैठी हूँ अपने। मैं अपने घर में रूम में बैठी हूँ, बाहर चौक पे इतनी रात को कहाँ जाऊंगी बैठने। अरे वो बाहर का वो लगा रखा है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बाहर का लगा रखा है इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, मैं तो अभी तो रात हो रही है, सुबह कहाँ हो जाएगी। माँ, मेरी नेट पे शनि मम्मा ने मेरी तो हेल्प नहीं की। आई मम्मा। मम्मा वॉल में स्टेटस दिख रहा है ना, इसलिए पूछा जी। नहीं भैया, ये बैकग्राउंड लगा है, स्टेटस वॉल पे नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड लगा दिए हैं इसलिए आपको। और बताओ, फैमिली में सब लोग बढ़िया हैं आपके? बाबा साहब का जी। यश भैया, प्रियांशु। अच्छा, ऐसे ही बाबा करके गुस्सा करके। मेरे फैमिली में अकेले हूँ जी।
अच्छा भैया, आप अकेले हैं? फैमिली में और कोई नहीं है क्या? और मैं ठीक हूँ। ओके, ठीक ही रहना चाहिए भैया। दीदी हैं, उसकी शादी हुई है। अच्छा भैया, दीदी है, शादी हो गई है। मम्मी होंगी, मम्मी पापा साथ में नहीं होंगे, गांव में तो होंगे। बताना शौर्य भैया। ये देख। नहीं है जी, मम्मी का डेथ हुआ सन 2015 में और पापा का सन 2017 में। तब तो बहुत दुख की बात है भैया। और भाई बहन नहीं है आपके साथ? मतलब आप दो ही भाई बहन थे, दीदी थी, दीदी की शादी हो गई, घर चली गई, और आप? आपकी शादी अभी नहीं हुई भैया? हाँ जी, क्या करें। तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी भैया। मम्मी पापा में से कोई एक होता तो थोड़ा सा ये होता। मेरी शादी अभी नहीं हुई है। क्या करते हैं शौर्य भैया आप? मैं यहीं पूना में हूँ। मैं सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पर। अच्छा भैया, तब आपको अपनी शादी कर लेनी चाहिए ना। आपको अपनी शादी कर लेनी चाहिए ना भैया। फिर जब आप हर एक तरीके से सक्षम हैं तो शादी भी कर लेनी चाहिए आपको। अपनी फैमिली बचानी चाहिए, अकेले अच्छा नहीं है ना। एक एक साल का ऑर्डर मिलता है मुझे। अच्छा, लड़की कौन देखे जी? ऐसी बात नहीं है भैया कि मतलब मम्मी पापा नहीं है, सिस्टर हैं आपकी, आपसे बड़ी हैं, शादीशुदा हैं, तो इतनी तो हेल्प कर सकती हैं। और रिलेशन में लोग तो होंगे ही। मेरा ये ज़्यादा है जी। कितना ज़्यादा हो गया भैया?
36 ईयर का हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो जॉब पे चढ़ जाते हैं तो ऐसे में तो शादी हो ही जाती है। ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी एज निकल गई शादी नहीं हो सकती। अरे रिलेटिव के कुछ लोग तो आपके ऐसे होंगे जो खास मामा मामी, आपकी बड़ी सिस्टर हैं, जीजा दीदी, सब लोग देखेंगे जो होगा वो। मेरी माँ सबसे छोटी थी। अच्छा, ऐसे तो कोई न कोई तो जरूर ही होगा। मामा सब बड़े थे, वो सब मतलब गुजर गए। अच्छा, होता है भैया, कभी कभी ना जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, इंसान घिर जाता है। मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ। अंकल वगैरह हैं पर वो ज्यादा बात नहीं करते। जब अपने नहीं होते तो कोई नहीं होता है, जब अपने होते हैं तो सारा लोग होता है, समझे। इंसान, एक कहावत नहीं होती, जब अपना बना होता है ना तो सब लोग पूछते हैं, जब अपना बिगड़ जाता है तो कोई नहीं पूछता। बुआ है वो ही एक जो बात करती हैं। अच्छा भैया, तो वो भी तो आपकी कुछ प्रॉब्लम समझ सकती हैं। बुआ है वो भी तो एक माँ के समान है। मेरी माँ और पापा ने सबको पढ़ाया पर वो जो बीमार थे तो कोई नहीं आया। ऐसा होता भैया, किसी ने हेल्प नहीं की। आपकी बात सही है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मम्मी पापा को क्या हुआ था भैया? पैसे ना होने के कारण वो दोनों गए। कोई बीमारी थी क्या भैया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम? मोटर भी चल ही रहा है, बंद कर दो। कितनी देर में? कब चालू किए थे? साढ़े 9:30 बजे। पैर ढाक लो अंदर। चालू मोटर कब किए थे? 9:30। अब उसका वो बंद कर दो। चलो ठीक है। ज्यादा काम करने की वजह से कमर के जो मुनका होता है वो घिस चुका था, इसलिए चलना नहीं आता था। अच्छा, चल नहीं पाते थे।
तब अपने हाथ से बनाते खाते होंगे भैया। बैठ के शुगर की बीमारी हुई। अच्छा, शुगर हो गया था। बाहर खाता हूँ, अभी पैसे हैं मेरे पास। ओके भैया, खा पी लिया करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया करो। खा पी लिया करो भैया, अपना ख्याल रखा करो। आज के टाइम में कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अपना स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम पर मेरे माँ बाप की समझ में नहीं आया। इसलिए वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसी बात नहीं है भैया, कभी कभी वो होता है ना, पेरेंट्स जिम्मेवारी को जंजीर में बंध जाते हैं ना। एक्चुअली क्या होता है ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई ऐसा होता है ना, अपने लिए नहीं करता है, और जब जिम्मेवारी सर पे होती है ना, वो उसको निभाने की कोशिश करता पूरी, कि नहीं फैमिली है, ये रिश्तेदार हैं, इनके पास पैसे नहीं है, अगर इनकी थोड़ी सी हेल्प कर। सबके अंदर वो चीज़ नहीं होती है। और बहुत लोग जो होते हैं ना, वो सबकी केयर करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो सबको सबको लेके चलते हैं, लास्ट में वो अकेले रह जाते हैं, उनको फिर बाद में कोई नहीं पूछता है। ऐसा भी मैंने कई केसेस देखी है। जब सबका काम निकल जाता है ना, सब भूल जाते हैं, फिर बात भी नहीं करते। क्या घी वो की बहुत महक आ रही है, बहुत अजीब से फील हो रहा है मेरे, जैसे लग रहा है उल्टी हो जाएगी। घी ना बहुत अजीब से लग रहा है। जब वो बीमार थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, तब कोई रिश्तेदार फोन तक नहीं लेते थे। बिल्कुल भैया, होता है ऐसा, वही तो चीज मैं कह रही हूँ, समय समय की बात होती है। जाने भी दो, क्या बताएं, नहीं तो रोना आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है भैया, हौसला रखो, हौसला अपने मन में रखो, बस उस चीज को अपने सोच समझ के, ताकि जो पेरेंट्स गलती किए वो आप मत करना। आता भैया, हमको भी आपकी बातें सुन के रोना आ रहा है, पर लाइफ चल रही है, हम अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी समस्याएं होती हैं, उस चीज को याद करो तो इंसान को बहुत दुख होता है। मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ। आज के समय में कोई किसी का नहीं है भैया। आज भी कोई एक भी मुझे नहीं पूछता कि तू कैसे है।
मुझे भी बुरा लगता है ना। आप क्या करती हैं जी? मैं एक हाउस वाइफ हूँ भैया, मैं कुछ नहीं करती हूँ। ठंड कैसी है दिल्ली में? ठंड ज़्यादा भैया, कल से ठंड दिल्ली में ज़्यादा है। ठंड के बजाय प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गए हैं दिल्ली में। अच्छा जी। हाँ भैया, आपके यहाँ कैसा मौसम है?
आपके घर में बहुत साइलेंट हैं आपके। अच्छा, घड़ी के कांटे की आवाज आ रही है। यहाँ भी बहुत ठंड है। अच्छा भैया, ठंड चारों तरफ बढ़ रही है इस टाइम। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। थैंक यू भारती भाई। सेम टू यू। कैसे हो? खाना हुआ कि नहीं आपका भी? आप कैसे हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताओ। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? अभी नहीं भाई, अभी खाना नहीं हुआ है। खाना खाएंगे अभी आधा घंटा रुक के। हाँ भैया, घड़ी की आवाज कांटे की आवाज आ रही है। मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है दीदी, इसलिए मैं लाइव में नहीं जुड़ पा रहा हूँ रेगुलर। कोई बात नहीं है भारती भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब तक गांव में हो तब तक थोड़ा सा अपना एंजॉय कर लो, फिर आने के बाद वही चीजें। गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो ही जाती है भाई। सूर्या भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या करें, आपका दुख सुन के तो हमें बहुत ज्यादा अजीब सा लगा, पर क्या करें भाई, अब उनके आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। हम भी आपकी तरह एक दुखियारी ही हैं। इंसान को एक दूसरे का दुख देखकर ही थोड़ा सा साहस मिलता है। किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, सबको भाई लगभग ऐसे ही है। आप कब तक लाइव चलाते हैं जी? मैं अभी बंद कर दूंगी भैया 15-20 मिनट में। हाँ दीदी, मैं आज एक नया चैनल बनवाया हूँ अंजू का। वो अंजू सिस्टर का है कि आपका है? मैंने सोनू भैया की लाइव पे देखा था ना, पिन किए थे। मैं जैसे एंट्री करी, फिर मैंने कहा उस पे लिखा था, तो मैंने उसको ज्वाइन करके मैंने सोचा आऊंगी लाइव पे, तब तक देखा कि लाइव एंड हो गई। बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है दीदी। ओके भाई, ऐसे ही करेगा, मेहनत करने पे उसका फल तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अंजू सिस्टर का जो था पहले वाला चैनल, उसको डिलीट कर दिया सारी वीडियो क्या? अभी 27 लोग ज्वाइन कर लिए हैं, अंजू का है। अच्छा भैया, मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं करता हूँ दीदी, करना भी नहीं चाहिए भाई, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज गद्दारी करोगे, कल को पलट को अपने ऊपर ही आता है। बुरे का इंतजाम बुरा ही होता भाई। नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया है चैनल पर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? वैसा भी वो चैनल से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों भारती भाई? वार्निंग स्ट्राइक आया था यूट्यूब की तरफ से। सोनू भैया पे भी आया है। सन 2022 से जॉब मिली है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अच्छी बात है कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं, सक्षम हैं। और हर तरीके से भगवान सब कुछ नहीं छीनते हैं, कुछ छीनते हैं तो कुछ देते भी हैं। इसलिए पेट भर खाना खा रहा हूँ। अच्छी बात है भैया, हम तो प्रार्थना करेंगे अपने महापुरुषों से कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। आप अपनी जिंदगी में जो इतना कष्ट उठाए हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको खुशियाँ प्राप्त हो। यही कर सकते हैं भाई, बताओ। बड़े भाई हैं आप, हमसे बड़े हैं।
पहले वाले चैनल का कंटेंट देखा था दीदी? मैं देखी थी सिस्टर का, जो वो कैट की वीडियो बनाती थी ना। मैं बहुत गुस्सा करता था अंजू पे। क्यों? क्यों गुस्सा करते थे भाई? भारती मामा है। हाँ, भारती मामा है। कहाँ है? कहाँ है? यहाँ दिखेंगे थोड़ी ना, कोई वीडियो कॉल थोड़ी एक दिखेंगे। ये है। हाँ हाँ। इनका दूसरा है। दूसरा है उनका चैनल। हाँ अच्छा, तुम जानती हो बाबू भारती मामा को? हाँ। अच्छा, क्या बोलोगी मामा को? मामा। मामा। हाँ हम्म, मामा बोलूंगा। मामा बोलोगे? हाँ। मामा ही बोलना। अगर नहीं बोला तो? नहीं बोले तो बोलेंगे, अभी सुनेंगे तो बोलेंगे। नहीं, बात ही नहीं करनी मुझे। हम्म, नहीं बात करनी मुझे मामा। मामा नहीं बात कर रहे तुमसे? नहीं। वो चले गए खाना खाने। वो सोचे ना कि तुम सो गई हो, इसलिए बात नहीं करे। आप ये चैनल को देखना कैसे ग्रोथ करेगा। अच्छी बात है भाई, जल्दी ग्रोथ करे, बहुत आगे जाए। क्या चल रहा है? हाँ आकाश, क्या हो रहा है? कहानी सुन रहा हूँ। किचन की लाइट बंद कर दो। मैं भी गाना सुनूंगा। मैं भी सुनूंगा। ये वाले और दूसरे में मुझे खड़ा में इस वाले में देख लूंगा। ये मेरे पास है। अच्छा भैया, पीएचडी भी पूरी की है लास्ट ईयर में। बहुत अच्छा भैया, आप बहुत अच्छे हैं, मेहनत किए हैं, तभी तो आपको सफलता प्राप्त हुई है। किधर चली गई भांजी? भांजी यही है, बोल रही थी ये किसकी आईडी है, भारती मामा की। हमने कहा हाँ। करे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, बोलते रहे मामा कैसी हो भांजी। कहाँ है? नीचे आओ। छोटा बच्चा है ये तो। छोटा बच्चा है? कहाँ छोटा बच्चा? अच्छा वो डीपी पे। बहुत कार्टून है भाई। कह रहे तो कोई छोटा बच्चा है। कहाँ लिखा मामा ने? मामा कहाँ लिखा है? दिखाओ, हम दिखाते कहाँ हैं। लिखा मामा ने? तुम्हारे पे कमेंट ही नहीं सो रहा इस पे, इस वाले फोन पे। नीचे नहीं आया। इस पे नहीं सो रहा है। मामा बोल रहे हैं कैसी हो भांजी, खाना खा लिया भांजी? मामा। भारती मामा। अच्छा। छोटा बच्चा आपका है, वो स्कूल जाता है। अरे भैया 9 साल की है, ये स्कूल जाती है। थर्ड क्लास में पढ़ती है। कह रही लड़का नहीं लड़की हूँ। थर्ड क्लास में पढ़ती है, स्कूल जाती है। बड़ा भाई ये है लड़का। बड़ा बड़ा भाई है, वो है लड़का। अभी भी छोटा हूँ मैं भाई। डीप पे देख के बोल रही है भाई। अभी भी छोटा हूँ। अभी भी छोटा हूँ भांजी मामा। कह रही बड़े हो, झूठ मत बोलो। बहुत बदमाश है भाई ये। अब तक सोनू भैया से लड़ी थी, कितने टाइम तक। छिपकली बोलते हैं इसलिए।
उनके लाइव में भी जाके कमेंट वमेंट करके आई है, छिपकली उपकली ले करके। अब देखो मुझे भांजी, मामा कह रहे हैं अब देखो। देख लिया। देख लिया। कह रही देख लिया। बाबा साहब की कृपा से चल रहा है सब कुछ अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाबा साहब की कृपा ऐसे अच्छी सी बनी रहेगी आप पे, हमेशा सदैव ऐसे रहेगी। आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। आपने शुरू शुरू में बहुत कष्ट झेला है ना, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। ऐसी बात नहीं है भैया। हमें भी सुन के बहुत ज्यादा अजीब सा फील हुआ, बट क्या कर सकते हैं। हमारे भी साथ वैसे ही कुछ है, हमारे भी जिंदगी में मम्मी नहीं है। उस चीज को हम एहसास कर सकते हैं भैया, आपकी बात को। छिपकली बोला मामा ने। छिपकली बोला मामा ने। हंस भी रहे हैं। मैं भी हंस लेता। नाम बिगाड़ दिए भाई, सोनू भैया नाम बिगाड़ दिए इसका। उसका रोने वाली इसकी छिपकली बोल दी है, सब वही बुलाते हैं। अच्छा जी। क्या? तुमको नहीं, तुम अपना काम करो। छिपकली कहाँ से लाती हो छिपकली? मामा क्या पूछ रहे हैं? छिपकली कहाँ से लाती हो छिपकली? गंदे मामा। हम्म? गंदे मामा। गंदे मामा है? हाँ। ऑटो स्टार्ट किसको बोलते हैं? ऑटो स्टार्ट बड़ी वाली रोने वाली को बोलते हैं। वही लिख रहा हूँ। सो गई वो। शाम को ना, शाम को सोनू भैया ने ना उसकी रोने वाली पिक्चर अपने बैकग्राउंड में लगा दिया था और छोटे कमेंट कर रही थी। और उसके बाद में जैसे वो देखी कि मेरी फोटो रोने वाली लगा दिए हैं, बस वो शुरू हो गई। 1 घंटे तक रोई भाई, बहुत मनाने के बाद तब जाके चुप हुई है। और ट्यूशन भी नहीं गई उसी चक्कर में। उसको प्यार से बोलोगे तो अच्छा है, जरा सा बस शुरू हो जाएगी। रोने वाली। अब ये भी तो रिझाती है उसको रोने वाली, तब तक वो शुरू हो जाती है। दीदी कैसा मेरा वीडियो लगता है? अच्छा लगा भाई। वीडियो अच्छा बना रहे हो भारती भाई आप। मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो। बहन जी अब मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा, मुझे सुबह उठना है जी, कल बात करेंगे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी आपका, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभ रात्रि। आप जा सकते हैं भैया, आराम करिए, खाना पीना खा के आप रेस्ट करिए, कोई बात नहीं है। आप बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आते रहिए ऐसे, 1 मिनट चाहे 2 मिनट के लिए, हमें भी अपनी बहन ही समझिए। कोई अपने मन की बात है तो आप शेयर कर सकते हैं, ऐसे मन हल्का होता है एक दूसरे से बात करने से, ऐसी बात नहीं है भैया। पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-4 ऐसा सेटिंग करूँगा कि तुरंत मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। बिल्कुल करिए भारती भाई, आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे हम लोग भी आएंगे। मैं आज अपना ग्रुप में भी डाल दिया हूँ चैनल लिंक दीदी। अच्छा भैया, अच्छा किए, थैंक यू। दीदी आप अपना ख्याल क्यों नहीं अच्छा से रखती हूँ? मैं अपना ख्याल नहीं रखती भाई अच्छे से, अब कैसे रखूँ बताओ? इतना अच्छे से अपना ख्याल रखती हूँ, कैसे रखूँ बताओ? दीदी के ऊपर जिम्मेवारियां हैं भाई, देखते हो काम करती रहती हूँ, लाइव स्टार रहती है, बैठ नहीं पाती हूँ, बात नहीं कर पाती सबसे।
बहुत काम होते हैं भाई, समय पर ना तो खाना खा रही हो और ना ही दवा खा रही हो। सच्ची बात तो राइट भाई, कभी कभी काम इतना ज्यादा होते हैं ना, फिर खाना दवा पानी नहीं दिखता है, तब ये दिखता है काम कब खत्म होंगे, जल्दी से कब खत्म होंगे, यही रहता है। उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है कि आपको पता ही नहीं कि मेरा और क्या क्या जिम्मेदारी। बात सही है भाई, आपकी बात तो राइट है, और इसके चक्कर में अपना ख्याल रखना भूल जा रही है दीदी। होता है भाई, बस ऐसे ही चल जाए एक एक दिन, अच्छी बात है ना। मौसम कैसा है गांव में? भारती भाई बताओ, गांव में मौसम कैसा है? मैं आता हूँ 2-4 लोगों से अपना चैनल ज्वाइन कर। अच्छा जाओ, ठीक है, ज्वाइन करवा के आओ। बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है दीदी। उस वाले चैनल से कमेंट करो, मैं अपने दोनों आईडी से यहाँ से ज्वाइन करती हूँ, मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ दीदी। अच्छा इतनी ठंड है, उस वाले चैनल से कमेंट करो। आकाश, उस पे ब्लू है ना, मामा भी बता रही हूँ, पापा के फोन से ज्वाइन कर देना। ओके। यही से ना। हाँ आकाश, ये मोटिवेशनल जो शॉर्ट्स से लिखा है ना, ये मेरे चैनल पे जाओ, मेरे उसी उसी लाइव पे जाओ, जो लास्ट वाले कमेंट आए इसी को ज्वाइन करो, पापा वाले फोन से। वीडियो पर कमेंट करना है दीदी। हाँ कमेंट कर देगा, उस पर रिटर्न नहीं करना है भाई। मोटिवेशनल जो शॉर्ट्स वाली ये आईडी नहीं दिख रही है, इसी को ज्वाइन करो। कमेंट एक डाल देना, ज्वाइन करना, पूरा देख के वीडियो तब कमेंट डालना। दिखाओ फोन, तो आवाज कम करो, मैं इधर दिखाओ, मैं बताती हूँ। मम्मा देखो, सोनू मामा इनकी लाइफ में गए, हमारी लाइफ में नहीं है। सोनू मामा इनके लाइफ में गए, आपके लाइफ में नहीं आए हैं? नहीं। सोनू मामा गंदे हैं। हाँ। घूमते रहते हैं ना। जरा मुझे बताना तो, चैनल नाम कैसा मेरा भांजा? और उस पर कमेंट भी कर देना भांजी। मैं क्यों करूं? किस पे? वेरी नाइस लिखो। हाँ। पर वेरी नाइस तो वीडियो नहीं है, क्यों वेरी नाइस लिखूं? मेरे बड़े भाई को शिकायत कर रही हो छिपकली। वेरी नाइस तो नहीं है बाबू, बताओ वेरी नाइस लिखूं कि ना लिखूं? लिखूं? हाँ। वेरी नाइस क्लिप पे। वेरी नाइस।
मामा का है, ये भी है। रुक जा, इसको भी कमेंट करो लाइक करके। अच्छा, आपने करके रखा है? मैं तो दूसरे वाले फोन से कर रही हूँ ना। हाँ, वो तो आपने उससे किया था। सुपर 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 सही है। हाँ, सुपर। मेरा नहीं भांजी, आपकी पूजा मौसी का है। मैं आपने था ना बोला हम कुछ। हाँ? आकाश उसे किए? हाँ, दिखाओ, सब्सक्राइब कर दिया। इधर दिखाओ कैसे किए, एक बार दिखाओ। ये देखो, कहाँ? कमेंट डाले? कहाँ डाले? इधर एक बार दिखाना मुझे, वहां से नहीं होगा। चैनल पर जाएं। हाँ, सब्सक्राइब तो कर दिए, कमेंट डाले हो? हो गया। विक्रम सिंह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं भैया? दीदी मेरी बैटरी ख़त्म होने वाला। दीदी ओके भैया ओके, आप जा सकते हैं, मैं आता हूँ 2-4 लोगों से सपोर्ट करवा कर। जाओ सपोर्ट करवा लो, मैंने भी अपनी दोनों आईडी से जोड़ लिया है। बिल्ली वाली पूजा मौसी का है ये चैनल। बिल्ली वाली पूजा मौसी का है। बिल्ली कहाँ गई? यदि मेरा सपोर्ट नहीं किया तो मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू किस बात का भाई? थैंक यू किस बात का? कौन बना ढूंढूं, हो कौन बना ढूंढूं। 2 आईडी से ज्वाइन किया इस बात का? हाँ भाई मैंने 2 आईडी से, एक गौतम से शायद। कौन सी आईडी थी? पापा वाली है ना? और इससे किया है एक गौतम से। और वो वाली आईडी दिखाना, पापा वाली आईडी कौन सी है? एक आईडी है अनुराग गौतम, एक आईडी है ये के गौतम। दोनों आईडी से ज्वाइन किया, कमेंट भी डाला है। आप तो 3 आईडी से ज्वाइन कर लिया दीदी। हाँ भाई मैंने अपने वाले से तो पहले ही कर लिया था आपको, जब सोनू भैया की लाइव में गई थी तभी। कौने बना ढूंढूं, हो कौने बना ढूंढूं। सौरभ भैया का भी मैं बोला तो मुझे तुरंत सपोर्ट कर दिए। सौरभ भैया कौन? मैं नहीं जानती हूँ भाई। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भैया ओके, थैंक यू सो मच। आप जाइए, मैं भी लाइव एंड करूंगी अब मैं भी लाइव एंड ही करूंगी। हाँ आप नहीं जानती होंगी दीदी। नहीं जानती हूँ भाई, सच्ची मैं नहीं जानती सौरभ भैया को।
सूरतें तुम्हारी भी मुझको ने बना लिया, कि सूरतें तुम्हारी भी मुझको ने बना लिया। मेरा नेटवर्क ही साथ नहीं दे रहा है दीदी। मैं अभी कस्टमर केयर से बात किया तो कुछ मेरा सुधार हुआ है। अच्छा भाई, मैं भी गांव में जाती हूँ, मेरा भी नेटवर्क नहीं आता। दीदी मैं जा रहा हूँ। मैं तो कब से बोल रही हूँ भाई जाओ। किसके लाइव में जाओगे? आप अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भाई, थैंक यू। आप भी अपना ख्याल रखना। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब तक छोटी आपको खोजते खोजते गई थी संजय भैया की लाइव में। भारती भाई से पूछो क्या कह रही है। सोनू मामा तो बहुत गंदे हैं, ये तो उनके क्या ही बोलूं। एक दिन भैया की लाइव में गई थी ना, कोई बोला था ना, भैया सो गए थे, कोई बोला था अरे कुंभकर्ण सो जाओ क्यों तब से ये उनको बोलती मम्मी ये कुंभकर्ण वाले मामा के लाइव में गए हैं सोनू भैया, सोनू मामा। क्या? और दवा भी खा लेना याद करके। ओके भाई ओके, दवा खा लूंगी। खाना खाऊंगी, दवा खाऊंगी अभी। धमरात्रि दीदी, धमरात्रि भाई, गुड नाइट। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, न्याला सलाम सोनू भैया। सोनू भैया भी हंसने में लगे हैं। आपका खाना पीना हो गया है सोनू भैया? जय भीम भारती भाई। अब मैं जा रहा हूँ सोनू भैया। सभी लोग अपना ख्याल रखना। ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय, बाय बाय भाई। भारती भाई बाय बाय। अब मैं जा रहा हूँ सोनू भैया। बाय भाई, बाय बाय, गुड नाइट, धमरात्रि। छोटी मामा कहाँ गए थे? सोनू मामा यहाँ कहाँ? वो दूसरी वाली लाइन में। किसकी लाइव थी वो? संजय मामा। संजय मामा की? हाँ। उनको क्या बोलती हो तुम? पता नहीं। बताओ। क्या बोलती हो बताओ, जल्दी बताओ। मामा पूछ रहे हैं सोनू मामा। क्या? क्या बोलती हो? किसको? मामा को, जिनके लाइव में सोनू मामा गए थे। मुझे क्या पता। मैं नहीं जानती, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। थैंक यू सो मच।
मामा आए, हाँ फोन दा। तो मैं मैसेज करूँ? अरे नहीं, मैसेज नहीं करना है। तो ना दोना ना। क्या दूँ? तो ना मामा चले गए। तो ना मम्मी टोना दीदी मामा चले गए। नहीं हंस कहाँ हंस रहे गए? नहीं हंस देखो सो जाओ, मामा डांट रहे हैं कि सो जाओ, क्यों जग रही हो? नहीं डाटा मामा कह रहे हैं क्यों जग रही हो, सो जाओ। थैंक यू भैया। जय भीम, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े भैया जी थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका लाइव में, लाइक कर दिया आपको, थैंक यू। कैसे हो आप? कैसे हो परवीन बड़े भैया जी? थैंक यू सो मच। हम ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। खाना पीना हुआ आपका कि नहीं अभी? थैंक यू सो मच।
देना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम सोनू भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। नीला सलाम बहन जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। अरविंद भैया जी मोस्ट वेलकम आपका। कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका बहन जी? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? आप कैसे हो अरविंद भैया? मेरा तो खाना नहीं हुआ, आप बताओ आपका हो गया? हम भी ठीक है बहन, खाना खा लिया हूँ। ओके भैया, थैंक यू सो मच। सोनू भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। परवीन बड़े भैया जी की तरफ से थैंक यू भैया, थैंक यू। घर परिवार में सब लोग कैसे? ठीक है बहन जी, सब ठीक है भैया। आप सुनाओ, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम, जय भीम, जय भीम। परवीन भैया जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 30 नंबर लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू परवीन बड़े भैया जी। सोनू भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। नीला सलाम अरविंद भैया जी की तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय प्रवीण भैया जी। सोनू भैया, अरविंद भैया भी आपको जय भीम, नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय अरविंद भैया जी। सोनू भैया भी बोल रहे हैं। ड्यूटी से आ गए भैया? परवीन भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय। नीला सलाम अरविंद भैया जी की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। परवीन बड़े भैया जी जय भीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू परवीन बड़े भैया जी, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम सोनू भैया, जय भीम।
थैंक यू भैया, थैंक यू परवीन बड़े भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सोनू भैया। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी, जय भीम। थैंक यू भैया बड़े भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच बड़े भैया जी, थैंक यू।
मैं आज बिल्कुल भी टाइम नहीं पाई परवीन भैया आपके लाइव में आई। मैं किसी के लाइव में आज नहीं गई, सिर्फ मात्र 10 मिनट की लाइव में सोनू भैया की, वो भी हमारी छोटी बेटी सपोर्ट करी थी। मैं आज अपनी लाइव चालू करके सुबह से काम में लगी थी। सॉरी चाहूँगी, कल आऊँगी आपके लाइव में टाइम निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया। जय भीम सोनू भैया। कोई बात नहीं, हम नहीं बुरा मानते, किसी की कोई भी मजबूरी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद परवीन बड़े भैया जी। सब नहीं समझते हैं भैया ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। जय भीम सोनू भैया। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच।
बाय बाय भैया, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय भैया।